will join us shortly. I will just give their brief intro, and after that, I will present some findings regarding healthy diet and nutrition. So, Dr. Shahzad is Vice Chancellor and Dean of Health Service Academy, Islamabad. And Dr. Marine, she is Director Nutrition in Ministry of Health Service Regulation and Coordination. And we have Mr. Faiz Rasool, who has more than 25 years of diverse development sector program management, supply chain, and public policy influencing experience in public health, food systems, urban governance at different level. Presently, is serving as head of policy and advocacy at Global Alliance for Improved Nutrition. So, Hamza, would you please display a presentation? Just taking start with the presentation. This presentation will give us a brief overview that what this seminar is about and what are the key statistics and things that are important to know before initiating discussion. So as we know that the poor diet and malnutrition, these are the great challenges, particularly for a country like Pakistan, where 67% of our population are unable to reach nutritious food. This results into drastic outcomes, like you can see in the table that our 37.6% of children under 5 years of age are stunted. It is basically 15.8% higher than the regional average. And our 7.1% of children under 5 years of age are wasted. And likewise, 2.5% of our children are overweight. And till now, we have made limited progress in NCDs. Target NCD is basically non-communicable diseases. As you can see that our 13.4% of women and 7.5% of men are facing obesity, and this is 3.1% times higher than the regional average. And we have estimated diabetes affects to 13.9% of women and in 14.7% of men aged 18 or above. And similarly, our 41.3% of women are facing anemia. These figures are basically showing a very depressive image, but we have made some progress, like our 48% of infants aged 0 to 5 months, they are exclusively breastfeed. The infograph here you are seeing, this is representing a graphical presentation of the stats. Till now, we have made some progress in stunting and wasting, and we are off course to meet the target of obesity, sodium intake, and diabetes, and we are on course to meet our target of childhood overweight and exclusively breast feeding. And we have no data of low birth rate. And in case of anemia, we have made no progress, even we are worsening in it. So when it comes to diet portfolio of Pakistan, as we all know that the diet is the important determinant of health and nutritional status. But in our case, unfortunately, we have less focus on diet, and it is because of number of factors like lack of awareness, lack of knowledge, and our socioeconomic conditions, our lifestyle. So the food consumption patterns of Pakistan is enriched with enriched with energy-dense food and with little food diversity, and this is one of the major causes of micronutrient deficiencies. Majority of our food consumption patterns consist of refined cereals, hydrogenated and unhydrogenated oils with a high consumption of salt and sugars. So presently, we have three major concerns. First one is the food consumption patterns, and then our sedentary lifestyle, and the other one is the food handling, our process and techniques. This is one of reason in micronutrient loss. So we have the key initiatives. As we know that we don't have any healthy diet policy. The Ministry of Health, along with the GAIN, is in process of developing the Pakistan's first national healthy diet policy. But till now, we have made few progress, like we have the few key initiatives. The first one is Pakistan Dietary Guideline for Better Nutrition. And this was developed with objective to improve hygiene, dietary patterns through scientific evidence and integrate diet and lifestyle.
Then multi-sectoral nutritional strategy. It focus on increasing access to nutrition, health, and nutrition education, food safety, food security, agriculture, and sanitation. Then the next is the BISP National Numa program 2020. Basically, it was launched to prevent stunting in children under 2 years of age, increase their weight gain awareness and to decrease anemia and disease burden. And then the next is nutrition intervention package, which scaled up to 100% coverage by 2021 and carried through 2025 with the cost of 190 billion. The next is Pakistan Nutrition Initiative, Pani. This is basically launched by Ministry of Ministry of Planning, Development and Special Initiative. They launched national multi-sectoral nutrition to decrease stunting and other form of malnutrition. And it is focusing on 36 districts that are backward and that have high cases of stunting. And presently, as I earlier mentioned, that we are working on Pakistan's first, the GAIN and the ministries, they are working on the Pakistan first national health diet policy. So against this backdrop, today we are discussing on what needs to achieve and to improve the health status and diverse nutrient dense food, and where the collaboration from stakeholders is needed. And we will spell out the possible way forward for Pakistan National Healthy Diet Policy. With this, I would request Dr. Shahzad for his remarks. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry for being late. There was a syndicate meeting in the university which got into some discussions and sort of deliberations. I came straight to here. When you talk about the public health perspective of healthy diet policy, one will definitely ask why you need a healthy diet policy in Pakistan, where there are so many already. You saw Ms. Hansa mentioned so many initiatives already being done, and a lot is being done and said in the name of nutrition. But mostly those nutrition interventions in Pakistan, predominantly they try to focus on one component mostly, which is food security. And they always talk about malnutrition or undernutrition. They consider malnutrition as undernutrition. And there is a lot of talk about agriculture, fisheries, livestock, livelihood, and they link it with nutrition, economics with nutrition, livestock, and other most social sectors, they link it with the nutrition. But I think the most important linkage of nutrition is the most important asset for all of us, which is health. Recently, many of the surveys and many of the research internationally being done has proven that health is approximately 72% of your health is determined by the nutrition or whatever diet you take. So if I say that the burden of disease for any country, 72% of that burden of disease is somehow related to food. And by food, we mean both water and diet and other things. So when we talk about healthy diet policy, or whenever we talk about healthy diet, that is a very important consideration, because without healthy diet, there is no health. And in COVID, you saw that and there was multiple articles and a lot of anecdotal evidence as well, that those COVID patients who were having good diet, they survived even the worst form of viruses. And those who were very strong, I myself lost some of my family members who were very physically fit, but they were in that period doing some diet or some less calories or having some very restricted food, and the COVID virus took them very seriously, and they were not able to defend themselves. Very healthy people, we lost healthiest people with COVID. They had nothing. So then the research, it came out that most of the diseases, they can be managed with food. Ilaj bil ghaza ka to
सबने नाम सुना हुआ है, सीरत नबी के अंदर भी है, वैसे भी है कि गजा के जरिए इलाज. And few months ago I went to China and I saw the traditional Chinese medicine. It's predominantly all healthy diet based. So the China with 1.6 billion population, they are managing their population mostly with food alterations, food addition and food deletion. And whole of the traditional Chinese medicine is based on herbs and other things. So West as well, Germany, Turkey, Spain, they have also started working on a lot of healthy habits, including healthy diets. So the number one point for all of us for consideration is that we should not be discussing. So this is another dimension. When you talk about food security, when you talk about enough food for malnourished children, whenever you talk about food, you say we have highest prevalence of stunting. फैज रसूल साहब भी, मैं भी, हर जगह जो हम चीज़ें कहते हैं ना बेचते हैं ना जब न्यूट्रिशन के लिए, तो हम कहते हैं जी हाईएस्ट स्टंटिंग प्रेवलेंस 42% पाकिस्तान में है, वेस्टिंग इतनी है, अंडरवेट इतना है. दैट इज वन एस्पेक्ट ओनली, दैट इज वन एस्पेक्ट ओनली. तो दूसरी जो एस्पेक्ट है कि हमारी जो बीमारियां हैं, अभी आपने नाम सुना 30% जो पॉपुलेशन, 33 मिलियन पॉपुलेशन डायबिटिक, और इससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन हाइपरटेंसिव है. सो ये जो एक ओबेसिटी के अलावा थिन स्लिम लोगों के अंदर भी डायबिटीज और हाइपरटेंशन एग्जिस्ट करती है. सो 26% diabetic patients in Pakistan, they don't know they have diabetes, so they will never adopt for healthy diet, and we cannot test everyone. So it is for everybody. For everybody there has to be a healthy diet. तो पहली चीज जो आपने अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि फूड एंड न्यूट्रिशन इज नॉट एन इशू ऑफ फूड सिक्योरिटी ओनली, और एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक फिशरीज or any other like wash, diarrhea prevention. It is a very important component for improving the health of the nation. So ये हेल्थ के लिए हमने हेल्दी डाइट पॉलिसी की बात करनी है. तो ये डिफरेंट होगी पॉलिसी थोड़ी सी. दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान हैज दिस मेक्स मी टू टॉक ऑन सम ऑफ द अदर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री विच वेरी फ्यू कंट्रीज हैव नाउ. एक तरफ हम बहुत हाई बर्डन अपने पास रखते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस का. अभी तक हम पोलियो फ्री नहीं हुए. अभी तक टीबी, हेपेटाइटिस बी, सी, मलेरिया, डेंगी, HIV, एड्स, ये सारे हमारे यहाँ प्रेवलेंट हैं. और उधर से अभी मैंने आपको नंबर्स बताए, 33 मिलियन डायबिटिक्स, 30 मिलियन हाइपरटेंसिव, कैंसर्स हाईएस्ट इंसिडेंस हो गया हुआ है, आर्थराइटिस बहुत कॉमन है, ब्रोंकाइटिस बहुत कॉमन है, चेस्ट डिजीजेस. सो एक तरफ कम्युनिकेबल डिजीज इन्फेक्शंस खत्म नहीं हुई, और दूसरी तरफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आ गई हैं. और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है ना, उनके अंदर कोई और हल नहीं है हमारे पास. वो एक इंटरनेशनली हम एक स्लोगन यूज करते हैं DPAS का, DPAS. So whenever we talk about non-communicable disease, we talk about diet. D is for diet. PA is for physical activity. एंड द लास्ट S, कई दफा हम डबल S लिखते हैं, स्लीप या स्ट्रेस, दोनों के लिए. स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी, डाइट, ये हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए ट्रीटमेंट है. इफ यू वांट टू मैनेज एनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर, joint pains, hypertension, heart disease, cancers, you need to have a changed diet, healthy diet. You need to have a good physical activity, not rigorous but moderate physical activity, and you have to have a very good sleep, and you have to manage your stress. जो स्ट्रेस है इस मुल्क में वो बहुत ज्यादा, आपको पता ही है कि उसकी एक और कहानी है. सो डाइट के जरिए भी स्ट्रेस मैनेज होता है दुनिया में. ये जो कैमोमिल का आप कावा पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं कैमोमिल की, वो दुनिया में मशहूर तरीन है कि जी कैमोमिल की ग्रीन टी ले लें, आपकी एंग्जाइटी डाउन हो जाएगी. सो DPAS जिसको हम कहते हैं, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस एंड स्लीप, ये ग्लोबल स्लोगन बन चुका हुआ है. इसका मतलब है नंबर 1 उन्होंने D रखा है, ठीक है ना, डाइट. तो सबसे पहले डाइट से शुरू करना है, उसके बाद बाकी काम करने हैं. अगर डाइट नहीं करेंगे तो बाकी 3 काम कर भी लें तो कुछ नहीं होने वाला. सो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आ गई, इसका मतलब ये हुआ पाकिस्तान इज करेंटली हैविंग अ डबल बर्डन ऑफ डिजीज. 1 infectious disease, number 2 non communicable disease. Both of these need healthy diet. Infections, कोविड को आपने ट्रीट किया ना फूड से, न्यूट्रिशन से किया, दुनिया ने किया, हमने भी किया, कावे भी पिए, पता नहीं क्या कुछ हमने उसमें इस्तेमाल किया. तो the infections, they are linked with the immunity of the body, and immunity of the body is dependent on your healthy diet. Very simply. So indirectly all infections, टीबी का आपने सुना होगा ना, टीबी भी किसको होती थी, स्लिमिंग डिजीज कहते थे इसको. विक्टोरियन एज में जब बादशाह और शहजादियां थी वो डाइटिंग करती थी, और फिर उनको टीबी का, क्योंकि इम्यूनिटी डाउन होती थी तो टीबी उनको घेर लेती थी.
तो किसी जमाने में ये ब्रिटिश उसमें जो स्लिमिंग करने वाली खवातीन थी उनमें टीबी पाई गई थी। और बड़े बड़े पुराने जमाने के जो फिरौनों की कहते हैं ना वो बेगमात भी और वो उनके अंदर भी वो वायरस बैक्टीरिया का पाया गया है हैरान कुन तौर पे कि जी वो जो डाइट अपने आप को पतला करने के लिए तो इम्यूनिटी डाउन हुई और टीबी का वायरस तो सॉरी बैक्टीरिया तो फिर रहा है हर तरफ। टीबी के बैक्टीरिया ने आपको सो वो भी हेल्दी डाइट ना लेने से इन्फेक्शन खत्म होती हैं और खत्म हो सकती हैं हेल्दी डाइट लेने से। So you can treat an infection with soups, with fluids, with a lot of good diet. And you do that. In flu, you always switch to some good healthy food, protein diet और इस तरह की। और इसके बाद ये जो दोनों डबल बर्डन हो गया। तीसरा जो है ना वो सबसे खतरनाक इशू पाकिस्तान का क्या है वो ये है कि नॉट ओनली वी हैव अ डबल बर्डन बट द प्रॉब्लम ऑफ हेल्दी डाइट इज प्रेवलेंट नॉट ओनली इन द पुअर बट इट इज हाईली प्रेवलेंट इन द अपर इनकम ग्रुप्स ऑफ द कंट्री। ये जो हमारा रिच किड है ना बच्चा है जो मम्मी डैडी बर्गर बर्गर बच्चा जो है वो भी हेल्दी डाइट नहीं लेता। तो फैज साहब मैं हम तो 100% आबादी को टारगेट करेंगे हेल्दी डाइट के लिए। इट इज और ये हमें जुल्फिकार भुट्टा साहब हमारे चेयर हैं मैं एक कमेटी में हूँ हेल्थ की भी न्यूट्रिशन की भी। हमने बहुत सारे सर्वे किए हैं बहुत ही बुरे हालात हैं हाई इनकम ग्रुप की डाइट के और खास तौर पे उनकी बच्चों के। और आप सब इसके विटनेस हैं जिस तरह वो पिज़्ज़े के पीछे हैं या वो ब्राउनीज के पीछे हैं आइसक्रीम के पीछे हैं दुनिया जहान की जो फजूल डाइट है वो लेते हैं ओबेसिटी भी ज़्यादा है और अंडर न्यूट्रिशन भी उनमें भी ज़्यादा है। सो ये जो मसला है ना तीसरा पहला मैंने बताया कि 72% डिजीज जो है वो कॉजेशन मेल न्यूट्रिशन यानी कि ओवर अंडर न्यूट्रिशन की वजह से है। दूसरा डबल बर्डन है और तीसरा दिस प्रॉब्लम ऑफ हेल्दी डाइट इज नॉट फॉर द पुअर किड ओनली और अ पुअर वुमेन और अ पुअर इट इज डेफिनेटली हिटिंग देम। ये मैं नहीं कह रहा कि उनको नहीं है बहुत ही बुरे हालात हैं हेल्दी डाइट के गरीब के लेकिन अमीर के भी हेल्दी डाइट कोई नहीं है बहुत ही बुरे हालात हैं। तो वो जो आप देखते हैं ना बड़े 5 स्टार हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर कभी आप जाएं मेरे साथ तो उनके कार्डियोलॉजी यूनिट के बाहर 35-35 साल के लड़के बैठे होते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज के साथ वेरी हाई एडवांस डायबिटीज के साथ कैंसर्स के साथ जॉइंट पेन्स के साथ। और एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं डिसलिपिडीमिया। मैं और बासित साहब काम करते हैं बासित साहब बाइड है बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी के हेड हैं वो डायबिटीज में बड़ा काम करते हैं पाकिस्तान डायबिटीज एसोसिएशन के सदर हैं पाकिस्तान के। मैंने जब तजीन जाफर के साथ आज से 10 साल पहले सर्वेस किए थे तो 20% था हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया इन यंग यंग एडोलेसेंट्स ऑफ पाकिस्तान 19 से 29 साल के दरमियान जो एडोलेसेंट्स हैं यंग अडल्ट नॉट एडोलेसेंट यंग अडल्ट में हमें 20% मिला था। 10 साल के बाद अभी बासित ने स्टडीज की हैं 43% ऑफ द नॉर्मल चिल्ड्रन ऑफ 20 से 29 साल आम उनको कोई सिम्टम नहीं है। कॉलेजेस में जाके आप उनको टेस्ट करते हैं यूनिवर्सिटीज में तो उनको इतना हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल निकलता है जिसमें उनको मेडिकेशन रिक्वायर्ड है यानी कि डबल हो गया 10 सालों में हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। और आप सब पढ़े लिखे हैं आप जानते हैं कि जब कोलेस्ट्रॉल लेवल या हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होगा तो क्या कुछ होगा स्ट्रोक भी होगा सीवीए हार्ट डिजीज भी होगी जॉइंट्स में भी चर्बी पड़ जाएगी चलने फिरने के काबिल में और फिर 35-40 ईयर की एज में उनको बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं जो गोरे को शायद 60 साल की उम्र में होते हैं। जो तीसरा खतरनाक इशू ये है इट इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल दिस पुअर डाइट अनहेल्दी डाइट इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना इन पाकिस्तान। बदकिस्मती से अच्छा एक चीज कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम गरीब को या पुअर को बड़ी आसानी से कन्विंस कर सकते हैं ये कह के कि यार ये देखो ये जो पढ़े लिखे और साफ सुथरे और बड़े अच्छे इलाके हैं ना वहां पे लोग इस तरह बिहेव करते हैं तो तुम भी इस तरह करो तुम भी तरक्की कर जाओगे पढ़े लिखे हो जाओगे या सेहत बेहतर हो जाएगी। इस केस में हम ये भी नहीं दिखा सकते पुअर को आपके पास कोई रोल मॉडल नहीं है दिखाने को कि देखो तुम गुर्बत में इस तरह कर रहे हो जो गरीब नहीं होते वो तो ऐसे करते हैं। वो जब देखती हैं ना घरों में काम करने वालियां वो जो हमारे मज़ारे हैं हमारे ड्राइवर्स हैं हमारे लोअर इनकम ग्रुप के जितना भी स्ट्रेटा है जब वो देखता है ना अपने जिनको फॉलो करता है या फॉलो करने की कोशिश करता है चाहे सोशल मीडिया पे हो या घरों में हो तो वो क्या करते हैं वो वही अपने घर में भी प्रिवेल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना तो वो तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तो कोई कन्विंसिंग किस्म की चीज कर नहीं सकते क्योंकि मेरा पढ़ा लिखा प्रोफेसर का बच्चा भी डॉक्टर के बच्चे भी और बड़े बड़े एडवोकेट्स और बड़े बड़े सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट के घरों के अंदर भी पिज़्ज़े आ रहे हैं और ये दुनिया जहान के सोडाज और कोलाज पिए जा रहे हैं और देसी फूड या अच्छी फूड का तो कंसेप्ट ही नहीं है। सो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये तीसरा कि यूनिवर्सलाइजेशन की वजह से लोग इसको कॉमन समझते हैं। ये अनहेल्दी डाइट जो है ना मतलब हेल्दी डाइट तो अब खत्म हो गई। अब वो कहते हैं जी पुराने वक्त गए जब देसी घी खाते थे पुराने वक्त गए जब रोटियां होती थी गंदम की अब तो वो मैदे वाला आटा है वगैरह वगैरह जगह जगह। और एक और चीज जो मैं अक्सर कहता हूँ फैस आपको भी बाकियों को भी कि पाकिस्तान की कौम बहुत इनोवेटिव है हमारा नौजवान लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो इनोवेशन की सारी अखीर है ना लिमिट है
वो दो चीजों पे हमने पहुंचा दी है, खत्म कर दी है इनोवेशन। पाकिस्तानियों की इनोवेशन खत्म होती है, एक कि हमने बागात को और अच्छी जगहों को किस तरह हाउसिंग कॉलोनी में कन्वर्ट करना है, और दूसरा हमने कितने किस्म के नान बनाने हैं या चाय बनानी है, चॉकलेट वाला और पता नहीं फलाना फलाना नान ढाबे बनाते हैं, और फूड के आउटलेट्स के ऊपर हमारी इनोवेशन खत्म है, और बेचते हैं, और वो बिकता है माल सारा, इस्लामाबाद में बिकता है, कराची में बिकता है, लाहौर में बिकता है, और पेरीफेरी में भी। मैं भी तो अब तो मैं पेरीफेरी पे जाता हूँ, कश्मीर के इलाके में, जीबी में, वहाँ पे भी हर जगह पे ये नुटेला का और जो चॉकलेट का नान, वहाँ पे भी ढाबे खुल गए हैं। सो इट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पुअर एंड अनहेल्थी डाइट इन द कंट्री। यू डोंट हैव अ प्रॉपर इंसेंटिव और एडवोकेसी टूल टू शो। तो इसी से मैं लिंक करूंगा, मैंने सेव द चिल्ड्रन के साथ बहुत काम किया इसके ऊपर, ब्रेस्ट फीडिंग पे। आप इमेजिन करें कि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना कितना आसान है। आप हेल्दी डाइट की बात करते हैं ना, सबसे पहले पहला पहला अमल जो माँ को करना है, वो बच्चे को माँ का दूध पिलाना है ना। उस पर कितनी बड़ी साइंस है, कितनी बड़ी सियासत है, और कितनी बड़ी पॉलिटिक्स और आजकल इकोनॉमिक्स है। बिकॉज द ब्रेस्ट मिल्क फार्मूला, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट माफियाज ग्लोबली, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान। वो इस तरीके से सिड्यूस करते हैं डॉक्टर को, और डॉक्टर फिर आगे से माओ को कि आपकी सोच है। हमने जो लास्ट सर्वे किया सेव चिल्ड्रन का, वो था ब्रेस्ट फीडिंग। देयर इज अ ब्रेस्ट फीडिंग कोड, यू नो, इन द कंट्री। देयर इज अ लॉ इन द कंट्री वेयर द वुमेन हैज टू गिव ब्रेस्ट मिल्क फॉर द चाइल्ड फॉर 2 years, और उसकी एडवर्टीजमेंट बैन है पाकिस्तान में ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट की। कोई भाई कंपनी वाला वो फार्मूला मिल्क की एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता, और ना ही वो कोई डॉक्टर उसको लिख सकता है, ये बैन है। हेल्दी डाइट में पहला जो उसूल दुनिया का, कि सबसे पहले हेल्दी डाइट तो इन्फेंट की, न्यूबॉर्न की क्या होगी, माँ का दूध। हम वही नहीं पिलाते, ना पिला सकते हैं। हमने जब सर्वे किया तो आप सोचें कि कितना बड़ा हमारे अपने अंदर जुर्म वाले लोग मौजूद हैं, मुजरिम, कि 72% ऑफ द वुमेन जिनका मैंने सर्वे किया, उन्होंने कहा कि हमें फार्मूला मिल्क जो है वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। यानी कि मेरे अपने भाइयों ने औरत को माँ का दूध पिलाने की बजाय उसे कहा ये, और उस 72% खवातीन से जब पूछा गया कि अच्छा आपको किस तरह, उन्होंने कहा जी पर्ची पे लिख के दिया था, पैड पे नहीं लिख सकते ना अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड पे, क्योंकि इलीगल है। तो वो छोटी सी पर्ची फाड़ी ये वाली इस कागज की, उसके ऊपर लिख दिया नाम उसका फार्मूला का। उन 72% की का 90% खवातीन ने बताया, 72% का 90% खवातीन ने बताया, मैं वो रिपोर्ट आपसे शेयर कर दूंगा। 90% औरतों ने कहा कि ना सिर्फ ये कि उन्होंने हमें फार्मूला मिल्क एडवाइस किया, बल्कि उस फार्मूला मिल्क का नाम भी लिख के दिया है, क्योंकि उसकी पर्ची जानी थी स्टोर में, वहां उसको पैसे मिलने थे, ठीक है ना, उसको वहां पे कमीशन मिलना था उसका। तो जब ये हालात होंगे कि पैदा होते साथ ही, और ये एसडीपीआई को चाहिए कि एक जरूर इसके अंदर कंपोनेंट रखे राइट का, राइट बेस्ड अप्रोच का। आप ये स्लोगन उठाएं हेल्दी डाइट में, गेन भी, खान साहब आप भी और हम भी, आप ये कहें कि यार मुझे एक बात बताओ, ये इंसान का बच्चा है, ये बकरी का, भैंस का, और कहते हैं ना पानी वाला दूध तो इसका हक ही नहीं है। ये इंसान का बच्चा है, इसको इंसान का दूध जो है वो इसका राइट है। सो इफ यू स्टार्ट कंसिडरिंग द चाइल्ड के जो बेसिक राइट है कि उसको माँ का, इंसान का दूध पिलाया जाए ना, विच इज माँ का दूध, तो अगर वही पहला आपने राइट उसको नहीं दिया तो क्या आप करेंगे। और मैं आपको इतना एविडेंस दे सकता हूँ, 11, ये कोई परसेंटेज में नहीं है, 11 गुना, 11 गुना, 1100%, 11 गुना ज्यादा चांस है डायरिया का उन बच्चों में जो माँ का दूध नहीं पीते। यानी कि एक बच्चा बीमार होगा डायरिया से, और 11 बच्चे बीमार होंगे, 11 गुना की बात हो रही है, अगर वो दूध माँ का नहीं पी रहे। अदरवाइज अगर माँ का दूध पीने वाला बच्चा, उसको नहीं होगा डायरिया, बगैर माँ का दूध पिए, बॉटल फीड है, कोई भी फीड है, वो 11 गुना है। और इट इज अराउंड 13 और 14 टाइम्स मोर चांसेस ऑफ निमोनिया। डायरिया तो तुक बनती है ना कि गंदी चीज थी उससे डायरिया हो गया, निमोनिया बिकॉज वो इम्यूनिटी जो माँ ने देनी है वो नहीं दे सकते। सो निमोनिया का चांस बच्चों का 13-14 गुना बढ़ जाता है अगर उसको माँ का दूध ना पिलाया जाए। तो मेरी बात सुने, पाकिस्तान का जो नंबर 2 किलर है ना, 1 और 2 बेस्ट जो हाईएस्ट किलर्स हैं बच्चे के, वो डायरिया और निमोनिया है। नंबर 1 किलर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ दिस कंट्री इज डायरिया, नंबर 2 इज निमोनिया। हमने न्यूमोकॉकल वैक्सीन के ऊपर इतना पैसा लगा दिया है, डायरिया के लिए ओआरएस और एंटीबायोटिक्स पे इतना पैसा लगा दिया है, उससे आधे पैसे भी लगा के हम लाजमी कर दें, बच्चे का राइट उसको दे दें कि माँ का दूध उसको देना है। अच्छा, माँ का दूध भी डॉक्टर ने ट्रेन करना है ना, माँ का दूध कैसे पिलाएंगे वो डॉक्टर बताएगी, तो वो नहीं ट्रेन करते, वो आसानी के लिए वो यही कहेगा जी बच्चा है नहीं। मतलब मेरे पीडियाट्रिशियन, मैं खुद पीडियाट्रिशियन हूँ, मेरे जो प्रोफेसर थे उनके पास जब खवातीन आती थी और कहती थी जी हबसी दोनों डब्बा तो दूध लिख के दो, तो आगे से कहता क्यों अपना दूध क्यों नहीं पिलाती, कहते नहीं पींदा। तो वो आगे से पूछते थे क्या कहता है, मैंने नहीं पीना। मतलब एक दिन का बच्चा ये तो नहीं कहेगा ना कि मैंने दूध नहीं पीना तुम्हारा, दे नेवर से दैट।
द प्रॉब्लम इज दैट वो जो औरत है ना वो एफर्ट नहीं करती, और शुरू में सकलिंग रिफ्लेक्स और ये सारे रिफ्लेक्सेस बनने में टाइम लगता है। तो हमारा हेल्थ सिस्टम इतना पुअर है इस मामले में, क्योंकि वो माफिया के साथ लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। माँ ने आके कहा नहीं कि दूध नहीं पी रहा या पीता नहीं है, और आपने फौरन उसको डब्बे का दूध लिख के दे दिया। तो जो हेल्दी डाइट है वो शुरू वहां से अगर करेंगे और 2 साल तक पिलाएंगे, तो आपके 2 मसले हल होंगे। एक, वो बच्चे की सेहत बेहतरीन होगी। दूसरा, ऑटोमेटिकली 2 इयर्स का गैप आ जाएगा। जब तक वो लैक्टेटिंग करती रहती है, उसको चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी आर लोएस्ट। अ लैक्टेटिंग मदर डज नॉट गेट इमीडिएटली गेट्स प्रेग्नेंट फॉर द नेक्स्ट चाइल्ड। उधर से आप ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ रहे हो, बच्चे को भी मार रहे हो डायरिया और निमोनिया से, उधर वो 6 मंथ्स के अंदर दोबारा प्रेग्नेंट भी हो रही है। तभी तो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट कहाँ से कहाँ पहुंचता है। एक औरत 3.4, यानी कि 4 बच्चे एक औरत के नॉर्मल है हमारे यहाँ पे। सो हमारा TFR 2.1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, उससे डबल है। तो ये जो हेल्दी डाइट पॉलिसी है, ये आप सोचें कि एक तो आपकी हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ के लिए 72% हमें एडवांटेज मिल जाएगा हेल्दी डाइट प्रमोट करने से पाकिस्तान में। अगर हम आधे लोगों को भी हेल्दी डाइट पे ले जाएं तो चले, तो 72% 36% लोगों को तो सेहत मिल जाएगी ना। दूसरा, बड़ी सिंपल सी बात है, डबल बर्डन है, दोनों तरफ इसका इफेक्ट होगा। तीसरा, कि हम जब बात करते हैं नॉट जस्ट पुअर, रिच की भी, तो वो जो एविडेंस है, एडवोकेसी है रिच का, उसको देख के, अच्छा हमारी जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं वो कई दफा अपनी मालकन को, अपनी मैडम को, और अपनी वो जो सिंबॉलिक किस्म की खवातीन होती है ना, जिनको फॉलो करती है निचले वाली लोअर इनकम ग्रुप की खवातीन, वो जब देखती हैं कि ये तो बॉटल पिलाती है और ये डब्बे का मिल्क, तो वो वही डब्बे का दूध, डब्बे की तस्वीर खींच के बाप खमद को कहती है कि मैंने भी यही पिलाना है क्योंकि फलाने साहब का बच्चा ये पीता है। तो ये बैड जो एक एडवर्टाइजिंग है ना हमारी, उसके लिए भी हमें कुछ करना है। और हेल्दी डाइट पॉलिसी में डू मेक अ नोट कि किस तरह आपने कन्विंस करना है। पुअर के बाद आखिरी चीज जो है वो है, बहुत ही खतरनाक बात है हमारे यहाँ पे, पाकिस्तान इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज रिमेनिंग नाउ कि जिसकी वर्स्ट डाइटरी डाइवर्सिटी है। व्हाट इज डाइटरी डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि एक ही किस खुराक नहीं खाना। मैं बचपन से, जब हम पैदा होते हैं ना, तो जिसको चावल का शौक है वो सारी उम्र चावल खा खा के मर जाता है। जो रोटी खाने वाले लोग हैं, चावल नहीं खाते, चावल नहीं खाते ऐसी, वो रोटियां ही 2-2 3-3 हर खाने पे खाएंगे। सो हमारी जो स्टेपल डाइट है वो एक है, और सालन भी फिक्स्ड है 3-4। दिस इज वेरी वेरी पैथेटिक। हमारी जो डाइटरी डाइवर्सिटी है ना होने के बराबर है, और ना होने की वजह से डाइटरी डाइवर्सिटी हमारी कभी भी हेल्दी डाइट हो ही नहीं सकती। हेल्दी डाइट्स में, और मैं जब पूछता भी हूँ ना किसी से, इवन सर हेल्थ वर्कर्स को नहीं पता कि डाइटरी डाइवर्सिटी किसको कहते हैं, क्योंकि हमने कभी पढ़ाया ही नहीं। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और मिनरल्स और ये। इट्स नॉट लाइक दैट। आप सारे गूगल में जाएं और गूगल में लिख दें माई प्लेट। माई प्लेट लिखें और इमेजेस पे क्लिक करें, आपको एक प्लेट मिलेगी जिसमें वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल होंगी। सब्जियां भी होंगी, फ्रूट भी होगा, थोड़ा सा कोई गोश्त का पीस होगा छोटा सा, कोई साथ अंडा रखा हुआ होगा, सीरियल्स रखे होंगे, चावल होंगे, गंदम होगा, और डिफरेंट किस्म के नट्स होंगे। और मैं ये नहीं कह रहा बादाम खाएं, मूंगफली भी नट है, वन ऑफ द बेस्ट फूड नट्स में सबसे। और पाकिस्तान में रुलती फिरती है मूंगफली, हम सिर्फ सर्दियों में खाते हैं। वो भी मतलब कोई दे दे तो खाते हैं, वरना खरीद के नहीं खाते मूंगफली, क्योंकि हम कहते हैं बड़ी लोअर इनकम की वो है। तो हमें जो प्रॉब्लम है, और वेजिटेबल सर, वो जो वेजिटेबल और फ्रूट क्यों नहीं खाते, मैंने पूछा एक से, आलम ही है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। उसने कहा आपको पता है मनोसलवा में क्या आता था? उन्होंने कहा जी आता था। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना, तुम बटेरे और इस तरह की चीजें देते हो, हमें कोई और भी वैरायटी पेश करो ना। जब सब्जियां आई और वो फ्रूट आया ना, तो बाद में उन्होंने कहना शुरू कर दिया ये हमें घटिया चीजें खिलाते हो, वापस हमें वही खिलाओ। तो आप ये सोचिए कि हमारे पाकिस्तान में फ्रूट एंड वेजिटेबल इज कंसिडर्ड घटिया डाइट या पुअर डाइट। इसलिए लोगों को फैशन भी नहीं है इसमें। हमें वो जो गोश्त और इस तरह की चीजें हैं वही हम पसंद करते हैं, और वो भी शेवर की मुर्गी, विच इज अनदर प्रॉब्लम। उस पर किसी टाइम डिस्कशन करेंगे। तो जिस तरह के हार्मोन्स शेवर के होते हैं, जितने वीक्स में वो चूचे से मुर्गी बन जाती है, इसी तरह वो बंदा भी उतने दिनों में मोटा हो जाता है, इतना ही। क्योंकि उसने भी वो जो, यू आर वट यू ईट एक्चुअली। आप जो बनते हैं ना, आप किससे बनते हैं? जो आपने खाया है। तो जो मैं खाऊंगा मैं वही बनूंगा। तो मैं चूचे का गोश्त या उसका मुर्गी शेवर की खाऊंगा तो मैं शेवर ही बनूंगा ना। मैं कैसे कोई किसी किस्म का कोई अच्छा कहते हैं ना कोई सेहतमंद इंसान बन सकता हूँ? तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। तो ये जो डाइटरी डाइवर्सिटी है, इट इज, और वही वही वाली बात है कि सब्जियां भी, आई एम नॉट सेइंग कि सब्जी भी आपको ब्रोकली खाएं या बहुत ही हाई कॉस्ट सब्जी में गाजर, मूली घर में लोगों के उगती है, नहीं खाते। कद्दू है, भिंडी है, ये जो आम कॉमन कॉमन वेजिटेबल, वो एक कंपोनेंट हो जाएगा। छोटा सा कंपोनेंट दालों का हो गया, थोड़े से आपने राइस, व्हीट
और ये नट्स हैं, नट्स में मैंने पहले कहा कि नट्स जो होम ग्रोन नट्स हैं दे आर इक्वली गुड। बेर भी जबरदस्त है, ये भी जबरदस्त है, सीजनल फ्रूट इसके अंदर आ जाते हैं। सो डायरी डाइवर्सिटी का नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे बताता है कि हमारी डायरी डाइवर्सिटी इतनी पैथेटिक है, आई थिंक इट्स 3.6 और 4% पीपल इन द कंट्री हैव अ डाइवर्सिफाइड फूड। 96% पाकिस्तानी डू नॉट हैव अ डाइवर्सिफाइड फूड। प्लेट देख के पता लग जाता है आपका। हमने जब सैलड भी खानी हो ना सर तो वलीमे पे खाते हैं, सिर्फ जाते हैं ना शादी ब्याह पे तो वहां पे हम सैलड डालते हैं पहले, फिर बाद में बिरयानी और गोश्त वोश उसके ऊपर खाते हैं। लेकिन वैसे घर में हमने कभी 2 सर्विंग्स रिक्वायर्ड हैं पब्लिक हेल्थ परस्पेक्टिव में, एटलीस्ट 2 सर्विंग्स ऑफ कच्चा फ्रूट जिसको आप सैलड कहते हैं, कच्ची वेजिटेबल, रॉ वेजिटेबल 2 सर्विंग्स। ये छोटा बाउल होता है ना, इससे हाफ कर लें। तो वो छोटा सा बाउल एक आपने 2 दफा खाना है दिन में सलाद का, विच इज कच्ची हुई कटी हुई सब्जी, मुख्तलिफ गाजर मूली सब्जी इस तरह की, और 1 सर्विंग सिर्फ खानी होती है विच इंक्लूड हाफ एन एप्पल। और एप्पल नहीं है तो अभी जो भी सब्जी है सीजनल जो है इस वक्त, लाइक खरबूजा है, तरबूज है, ये बेहतरीन फ्रूट है, दे आर फ्रूट। और फ्रूट ये नहीं कि आपने को महंगे वाला फ्रूट खाना है। तो इस वजह से ये जो हेल्दी डाइट पॉलिसी है, ये मेरे ख्याल में इसमें इन सब चीज़ों को अगर आप इनकॉर्पोरेट करें और इसके ऊपर एक्शन एजेंडा बनाएं और ज़रूर स्टिक करें, बेसिक से इंसेप्शन से प्रेग्नेंट औरत की डाइट की बात करें हेल्दी की, वो जो बच्चा पैदा करेगी वो अगली नस्ल है। शेवर की मुर्गी खा के बच्चा पैदा करेगी तो वो शेवर ही पैदा होगा, वो कोई वो काम की चीज़ नहीं पैदा होगी। और फिर वो जो बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे, डब्बे का दूध, और अभी तो एविडेंस आपके सामने आना शुरू हो गया है ना डब्बे के दूध में। मतलब पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा, वो एक खास लाख टन की तादाद में गवालों से दूध इकट्ठा करती है। हमने सर्वे किया कितना दूध इनके पास आता है कंपनी का, उसको 10 से मल्टीप्लाई करके आउटपुट देती है दूध की। आप समझ लें, मतलब 1 लाख टन आपने दूध लिया और जब वो दूध निकला तो वो 10 लाख टन था। फैक्ट्री के अंदर कौन सी भैंसें हैं और गायें हैं जो दूध दे रही है 9 लाख टन? नहीं है ना ऐसा। इसका मतलब है कि वो कुछ उसमें और चीज ऐड हुई है। इट्स नॉट द मिल्क विच यू आर ड्रिंकिंग इन द नेम ऑफ मिल्क। उसके भी बड़े इश्यूज हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा, मुझे, फैज रसूल को, खानसा को, हम सबको सबसे बड़ा मसला आएगा कि ये जो इतनी स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजिंग है ना, इसको हम कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं। हाउ कैन यू एडवर्टाइज, कहते हैं ना वो जो एक बहुत ही हाई लेवल की एडवर्टीजमेंट है ना, वो जिसको आप कहते हैं एक एक्शन और बड़ा ग्लैमर और बड़ा कुछ, ठीक है ना, वो जिसको आप देखते हैं कि जी आप ये पियेंगे फलानी बोतल तो आप 10 मंजिलों से मोटरसाइकिल नीचे गिरा लेंगे, आपको कुछ नहीं होगा, और आप उड़ भी रहे हैं और आप फ्लाइंग कर रहे हैं। ऐसे ऐसे इश्तिहार हैं कि वो देख के बंदे को दिल करता है कि मैं भी ये करूं, और थ्रिल आपको मिलती है, ठीक है ना। तो वो दिस इज द थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपने जरूर एक इसमें कंपोनेंट डालना है कि जो एडवर्टाइजमेंट है इसको टैकल कैसे करना है। वो हमारे पास ना तो इतना पैसा है, उनके पास तो मिलियनियर वो खुद हैं और मिलियंस ऑफ रुपीस देते हैं इश्तिहार बनाने में, लोगों को सीड्यूस कैसे करना है, ठीक है ना आप। और एक और चीज जो आखिरी बात है, देन आई विल स्टॉप। हम जो हेल्थ प्रोवाइडर हैं, हम अपनी बात करेंगे, मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ, पीडियाट्रिशियन भी हूँ, फिर पब्लिक हेल्थ में आया। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ना मौलवी की तरह एक ना वाली चीज मौजूद है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। वी डोंट नो टू टेल के करना क्या है। मेरे वालिद साहब गए एक प्रोफेसर के पास, उसने जनाब पूरे कोने में ना यहाँ पे लिख दिया कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। हार्ट पेशेंट थे, उन्होंने पढ़ा सारा, वापस आ गए, कहते हैं डॉक्टर साहब ये सारा कुछ ਕੱਢ ਦਿਓ सारा कुछ, सिर्फ इतने ए लिख दियो मैं खाना की है, क्योंकि तू तो सारा कुछ ही कर देता है। गोश्त नहीं खाना, चिकन नहीं खाना, पालक नहीं खाना, टमाटर नहीं खाने, तो मैं खाना की है। ये हमारे हालात हैं। सो जो आखिरी चीज बात मैं कर दूं कि डॉक्टर्स जो है ना वो प्रोहिबिशंस प्रोहिबिशंस लोगों को जिस तरह मौलवी कहता है ना ये ना करो, ये ना करो, ये नहीं दसदा करना की है, जिंदा कैसे रहना है, तरक्की कैसे करनी है, मैंने बस ये नहीं करना, ये नहीं करना, नहीं करने के गर्दान है। डॉक्टर के पास जाएंगे वो भी ये कहेगा कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। करना क्या है हेल्दी रहने के लिए? नो वन टेल्स यू। आप इस डाइट पॉलिसी में ये जो इनहिबिशंस हैं, प्रोहिबिशंस हैं, इनको फोकस ना करें। आप कौम को ये बताएं उन्होंने करना क्या है और कैसे करना है, फिर लोग करेंगे। वरना ये तो बड़ा आसान है जी, आपने घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना, ये नहीं खाना, हाउ इज इट पॉसिबल? आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने इतने दिन तक, हाउ इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल है। आप बताएं कि क्या खाना है, लिस्ट बनाएं और उन चीज़ों को दें। तो ये ज़रूर आपने इसमें डालना है कि जो हमारे यहाँ पे जो और वो जो इसके मुकाबले में ये जो मीडिया एडवर्टाइजमेंट है, ये हैप्पीनेस और जोश और खुशी और थ्रिल और एक्सटेसी बेचते हैं, ठीक है ना। टू द टेस्ट अपार्ट और डू द डू और
कहते हैं ना, स्टिंग लाइक अ बी एंड फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, ऐसे ऐसे इश्तिहार हैं, ऐसे ऐसे उनकी चीजें हैं कि बच्चा बड़ा इंप्रेस होता है उनकी बातें सुन के। हम कैसे बनाएंगे जिंगल्स? हमारे पास कोई जिंगल नहीं है, हमारे पास जिंगल ही नहीं है कोई हेल्थ बेचने का। पाकिस्तान में बदकिस्मती मैं कह रहा हूँ, देयर इज नो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन दिस कंट्री, इन एनी प्रोविंस। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जिसको कहते हैं, कौन सी हेल्थ देती है आपको? हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ हेल्थ प्रोग्राम इन दिस कंट्री? नो, यू ओनली हर्ड द प्रोग्राम ऑफ मलेरिया, टीबी, डेंगी, HIV, हेपेटाइटिस। सो इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मैं अक्सर कहता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का नाम मिनिस्ट्री ऑफ डिजीजेज रख देना चाहिए। We have a ministry of diseases, we do not have a ministry of health because we don't do anything which is related to health. तो हेल्थ के लिए, हेल्दी डाइट के लिए एक बहुत बड़ा कंपोनेंट चाहिए होगा, और उसके लिए सिर्फ गेन काफी नहीं है। तमाम जो न्यूट्रिशन में काम करने वाले लोग हैं उनको ये सोचना पड़ेगा बैठ के कि हम जो पॉजिटिव एनर्जी है या पॉजिटिव वाइब्स हैं, करने कौन कौन से काम है जो हमने लोगों को कहना है ये एक्शन करो तो हेल्दी रहोगे। ये कोई नहीं बताता, और कैसे करना है ये, आप कैसे लोगों को हेल्दी डाइट पे लेके आएंगे? इफ इट इज एक्सपेंसिव, इट शुड नॉट बी एक्सपेंसिव। द हेल्दी डाइट इज एक्चुअली, अगर आप सही सोचें तो उस जंक फूड की डाइट से सस्ती पड़ती है अगर घर में हेल्दी डाइट बनाए। पर तरीका नहीं पता किसी को, कभी किसी ने बताया भी नहीं। अभी तो फूड पेंडा के ऊपर है सारी सारी कौम, हर कोई उसके ऊपर है, और वो कैसे बनता है, कहाँ बनता है, किसी को नहीं पता है, और हम प्रमोट कर रहे हैं। सो दिस इज विद डाइवर्सिटी वी शुड टेल हाउ टू प्रोसीड। और हमने मार्केटिंग को, उनकी जो नेगेटिव मार्केटिंग है जिसको बड़े प्यार से वो बेचते हैं, बड़े सिड्यूस करते हैं सारी कौम को, उसको कैसे टैकल करना है। ओवर टू यू हंस। Sir, thank you so much. As you rightly said that without healthy diet, there is no health. And I clearly remember when I attended this last talk, the first thing I did when I reached home, that I designed my plate. And till now, I'm following strictly religious following that. So thank you for educating us, sir, that how we can manage infectious diseases, stress, and other chronic diseases with diet. And you have well said that 72% of diseases that are related to malnutrition, that can be, or that we can overcome them. And thank you for educating us on double disease burden and poor diet as a universal fact. I guess we need a strong advocacy campaign for that. I guess this is the only solution we have. Like what I do while making my meal, that I follow what celebrities eat, because they are quite conscious regarding their diet. So I follow them, and then I prepare my meal. So with this, now we move toward Dr. Marine, and she will be giving her views on government expectation, ideology, and objectives for healthy diet policy. Unfortunately, she is not here, and she has a video recorded message for us. Hamza, Hello everyone, I'm Dr. Mehreen Mujtaba and I'm Director Nutrition at the Ministry of National Health Services, Regulation Hamza, and Coordination. The topic that we are discussing today is very close to my heart, not only being the Director Nutrition, but we all need to be cognizant of the fact that despite being a population of 241 million people, 67% of our population does not have access to a healthy diet, and that remains a prime issue. For Pakistan, poor diet and malnutrition are some of the most significant challenges that we are facing today. Although our National Nutrition Survey was conducted in 2018 and 19, and unfortunately, these are the figures we are still quoting, despite the fact that we've gone through COVID-19 pandemic, we've gone through the mega floods of 2022. But still, according to the NNS, 40.2% of the children under the age of 5 are stunted, and 17.7% children are wasted. This already being declared as an emergency by the WHO. This situation is particularly severe for women who are highly vulnerable to malnutrition. And I believe Pakistan in the current scenario requires a strong political leadership to champion the cause of healthy diets. So how do you define a healthy diet? Healthy diet is the one which promotes health, prevents diseases, it provides adequate nutrients from a sustainable food system for promotion of health,
and it is also a diet which abstains from harmful substances. Now, in 2021, the UN Food System Summit was held, and Pakistan is a signatory to the Coalition for Action on Healthy Diets from Sustainable Food Systems for All. The aim of this coalition is to promote an environment where everyone eats healthy diets from a sustainable food system. In that regard, a national consultative meeting was led by the Ministry of National Health Service Regulation and Coordination in 2022, strongly recommending developing a national healthy diet policy for Pakistan. Now, some of the ongoing activities that the ministry is undertaking, as well as some of the future plans for the ministry, are that the Ministry of National Health Services, Regulation and Coordination, along with stakeholders and partners, plans to organize federal and provincial consultations to support the policy formulation processes. Since after devolution, the autonomy is with the provinces. So it's really important for us to reach out to the provinces and ask their opinions and make that as a part of our national policy. Now, these consultations will shape the policy framework with a focus on healthy diets from sustainable food systems. The ministry will also start consultation in the provinces. Opinion should include a multitude of stakeholders, including academia, in youth, as well as the private sector, because it's a multi-sectoral approach, and we need to bring in other stakeholders into the dialogue. And personally, in my opinion, we should have members from the community, especially the vulnerable communities, and we should make them sit around the table along with all of us policy makers, and we should listen to what they want to say and what they want from the government, whether it's the federal government or whether it's the provincial government. Most of the policies, unfortunately, are donor driven. And the emphasis on the ease of accessibility for most of these donors. What we are aiming for at the Ministry of Health is to formulate policies primarily in consultation with the provinces, give them the ownership of carrying all these policies forward, but then again also to have local governments and community members sit across the table with them and ask them their needs and their asks and what sort of policies they would like to for the government to formulate. Another suggestion which I would like to make to all of you who are present is to have locally contextualized recipe books promoting healthy recipes for mothers, for pregnant and lactating women, as well as for children when they start their complementary feed. And all these recipes should include the locally produced food, depending on the provinces, and they should be translated in Urdu. Thank you very much for this opportunity, and I wish you all a fruitful dialogue, and let's not lose the momentum and carry this agenda forward, because it's the need of the day for our country. Thank you. Hello, everyone. With this, I move to Faiz Saab. As you heard that she's talking about the ministry role in development of policy, and we know that the GAIN is proactively involved in this process. So what's your intake regarding the overall policy context and way forward, particularly keeping the government perspective in view? Thank you so much, Kansa.
thanks to Dr. Shehzad Sir, SDPI. I think my appreciations, first of all, to SDPI and colleagues and partners for showing your willingness and creating kind of political ownership towards the approach and way that we need to go for a national healthy diet policy. We did a policy landscape analysis a couple of years back, almost in 2021, and that gave us very interesting kind of picture across the country. We are a country where we used to say that Pakistan is a country where we have serious malnutrition issues. Pakistan is a country where we must implement nutrition emergency. But very interestingly, we don't have any nutrition policy in country. So this is one of the key findings out of our landscape analysis, what we did for our policy landscape. So it's amazing situation. I would say it's devastating situation rather, that we are saying that we are facing a serious trouble under nutrition, but we don't have any guidance how to improve the nutrition. On the other hand, another finding was that our NCDs, exactly what Dr. Shehzad mentioned at the start of discussion, non-communicable diseases are increasing on very high pace, but we don't have any guidance available. We do have a ministry of diseases, sir, but we don't have any guidance available how to address these non-communicable diseases. What are the diets or foods we need to consume for that? We heard and we used to discuss about dietary diversity. What is that? It's again something which we don't know, because there's no such awareness about these healthy diets and dietary diversity kind of things. So number of serious concerns and issues those arose out of our landscape analysis on policy in the country. Hansa, at the start of her few slides, she mentioned about few critical indicators on nutrition. You know, those are the outcomes, situation or outcome of what we have, what the problem is in country right now. Very interestingly, almost 82% of our population, it's closer to 200 million of Pakistani population, they don't have access to healthy diets. So this scenario clearly reflects what our problem is. Why our productivity is not up to the mark. Why our nutrition situation, our nutrition indicators are right below from the benchmark. So this situation reflects that we need to think about, first of all, our diet, healthy diets, healthy foods, dietary diversity. So number of new things to add in our curriculum. And another finding into our landscape analysis regarding policy was that youth has never been engaged into our policy work. Women has been considered, but not at large. So missing, again, two key missing links. Why we have not included youth into our discussions and policy and program planning? And because we don't understand their contribution. Youth in Pakistan, you all know better, almost 64% contribution comes out from the population which is under the age of 30. So huge population, but they don't have any contribution to our policy areas and policy work. So these were few areas those we need to address. After that, on the base of UN Food System Summit, where Dr. Shehzad Saab and Khansa mentioned, that really gave not only Pakistan, but all the member countries of UN, that food is an area where our attention has been quite less, and we need to increase our attention. We have been putting our investments around healthcare facilities, but what else? How much we have invested towards food, diet, because the major contribution, the problem is coming out of food-borne issues or food-related problems.
Either it's nutrition, as we discussed, diets and healthy diets and unhealthy diets, or it's non-communicable diseases. So where the problem is right now, what are the challenges behind? Why we are not able to help our nation to get the healthy diets? One point Dr. Shadab very clearly mentioned and addressed. We have been thinking about that maybe healthy diet should be a very expensive kind of thing. That's why we are not consuming healthy diet. But he mentioned that we do have alternate options for all the good healthy products. Healthy products. But who knows about that? Who communicates to the population about that? That for calcium, not only milk, we have number of other substitutes of milk which can provide you calcium. For iron, you don't need to only go for meat. You have number of other alternates available which you can consume. But how we can really know about those alternates and additional indicators for that? So that's why well, let me acknowledge and appreciate Ministry of National Health Services for their ownership towards this national healthy diet policy. And they not only acknowledged and appreciated the idea, but they also taken over this whole process of policy formulation. And Ministry of National Health Services, they are taking lead on this national healthy diet policy. When we started discussion about policies in country, we heard a very interesting comment from number of stakeholders that Pakistan is a graveyard of policies. You may have heard about that. इस कब्रिस्तान के अंदर हमें और कितनी पॉलिसीज को बनाना और डुबोना और दबाना पड़ेगा. हमने ये नहीं सोचा कि ग्रेवयार्ड तो है, but how much policies are inclusive. Just one example. Once we discussed about national food security policy. For our food security, climate change is one of the key component behind. Our Ministry of Climate Change, they have never been engaged for our national food security policy. So if our policies are not inclusive, that should be, buried, definitely. Obviously, those would be buried because we don't need those kind of policies जिसके अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिसके अंदर यूथ का कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिसके अंदर वुमेन के थॉट्स, उनके आइडियाज नहीं है, जिसके अंदर हमारे जो रिसर्चर्स हैं उनका राइट कंट्रीब्यूशन नहीं है, और जिसके अंदर जो इम्प्लीमेंटर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन मौजूद नहीं है. सो this policy in the policy context would be different in a way. Number one, we are committed to, first of all, get the high level political ownership and commitment, first step. Second, we need to make it inclusive in a way that women should be there to contribute, provide their thoughts, needs, requirements into it. Our youth should be there to ask, to share their ask that how youth can contribute, what are the needs of youth, what youth is expecting out of this policy. Two areas. Number three, which is very important, is our key implementers, our provinces, provincial stakeholder, governments, private sector. So how we started, the next step is to engage our provincial stakeholders. From provinces, we are supposed to engage all the relevant stakeholders, either it's health, it's food, it's agriculture, it's academia, it's planning and development, and many, many more, including private sector. So these all are our critical stakeholders. Those have been started addressing and engaging for this policy work, and those would be part of this policy for the future to make it a live, robust, and strong policy that can be really implemented to get some kind of right outcome, what we think out of it. I think there is one very, very interesting aspect out of it. Although we started from multi-sectoral national nutrition strategy a couple of years back, but we do also have a national dietary guidelines, food-based dietary guidelines, but where those guidelines are being adopted. Just because of the fact that we don't have any guidance, how we can connect different dots and how we can connect different areas to get the benefit out of it. Third area
is about the data and how we can access the right information to inform our policies. Data is not available. Dr. Shehzad Saab, he has been very close part of us, including STPI team. We started working on food system dashboard for Pakistan, and we realized that we don't have data available to backstop our any implementation work, any policy work. And most of our policies, our plannings are based on uh, what we used to say. There's a typical word for that, incremental approach. That last year we spent on malaria program X amount of money, and this year we suppose we'll spend X amount of money plus 10%. So this is an incremental approach we have been putting and using during the last 76, 77 years of Pakistan age. But now I think these kind of policy based upon the data, what is available. If not available, we need to create wise about that. That we don't have data available for X indicators, we need their data. So how our data providers, how the researchers would get the data out of it. For this purpose, that is, although that is a parallel work, but that is very much linked to this policy work. And that work is known as National Nutrition or National Research Agenda. And that National Research Agenda will give us clear-cut indication that which are the areas where we don't have data, where we need to create evidence, and for which we need to support our R&D, our researchers to get the data out and share with policymakers to use that data. So these are different pillars what we are planned and what we are using to strengthen and develop this policy work. Right now, we are in a very right time to develop such kind of policy because of the fact that we do have global support with us. Globally, there are new, very interesting coalitions. Number one, Zero Hunger Coalition, which is global coalition and which supports all the work across the member countries of all the UN members to help them out how they can address and how they can reduce the hunger in their countries. Number one, School Meal Coalition. Our children at school, they need the food. They need the right food at school. And this practice is everywhere. Just think about most developed countries. They are providing school meals at their schools from the state side. But in Pakistan, we have only one example that's known as Tawana Pakistan, and that has been a failure because of multiple facts. And one key fact was missing data links and missing evidence to prepare and design that program. Moving forward, so another global coalition has been a healthy diet coalition, what Dr. Mehreen mentioned in her comments. So I think this is a wonderful situation for us that we have globally acknowledged kind of platforms, coalitions, and we can use those coalitions. I personally approached Dr. Shehzad Saab. I approached our global coalition on healthy diet, and they were so happy that Pakistan is taking lead on this national healthy diet policy, and they have offered all the possible support from global context to backstop Pakistan national healthy diet policy. So in terms of a way forward in front of us, our Pakistan national healthy diet policy, it need to be addressing all the potential key areas what we have already identified, as we mentioned earlier: data issue, inclusiveness, and the robustness. So all of these three key areas would be addressed, and we believe that these are strategic objectives of Pakistan national healthy diet policy. Another key area which has been missing in our previous work, such kind of work on policy formulation, was collaboration and stakeholder engagement. I think this is what I already mentioned in my few earlier points, that in this policy we have deliberately fixed and drived all of us, all the stakeholders, those are worked in a collaboration for this policy.
that we need to put more focus, more interest, so that we can really engage rightly all the relevant stakeholders, not only at the federal level, but also from provincial, I mean, sub-national and national level both. Evidence, I have already discussed that how much need is evidence, and we need to work on evidence base, and evidence is required to be focused in real terms. Finally, at the closing point, I would take few words from Dr. Shehzad Saab. He mentioned that if we have diseases, so we have non-communicable and we have communicable. Both hands, we have everything, we have double burden. If we have nutrition, we have undernutrition and we have overnutrition. We have underweight and we have overweight. So 2 and 3, again, very important point from Shehzad Saab, that our communication approaches are very weak. So I think these would be the critical points. Those would be taken care for drafting this policy, and those would be the part of Pakistan National Healthy Diet Policy, so that we can already at least learn from our failures, and we can incorporate the global learnings and best practices into our work. So this is a quick kind of reflection on the policy framework, what we are adopting for at least National Healthy Diet Policy, and how we would try, and we are trying to make it more robust in a way that we include all the relevant areas and we adopt the best practices in the shape of policy framework for the Pakistan. Thank you so much, Khansa. Over to you. Thank you so much, Faiz Saab. As you have mentioned that 82% of our population don't have access to healthy food. But you even quoted, and Dr. Shehzad even mentioned that the healthy food is cheap. There are options, there are alternates, but we don't know about them. So I guess we need to intellectually bridge this gap. And thank you for educating us about the 3 pillars, including the high-level political ownership and involving women and youth and the key implementers. I guess for a balanced approach, we need a good and strong communication and coordination at both provincial and federal level. With this, I would request Mr. Qasim Saab, who is our Deputy Executive Director, for his vote of thanks. Questions? Does anybody has any question? Yes, please. Comes the mic. I have a mic. Thank you. Sir, I'm Ali. I work here at STPI as media coordinator. Sir, you mentioned that data inclusiveness and robustness would be the drivers of this policy. But you think that the responses among the public, among the masses, would be different from area to area, from different age cohorts. So there should be a tier-wise approach while collecting data, while engaging youth, engaging women, even engaging adolescents, what they think about healthy diet, healthy food, or dietary diversity. When we will discuss these issues, the response for every the youth of a middle class, of a lower class, or from the elite, they would have different responses. We can't fix one decision for all. So to make an inclusive decision, do you think that your policy would have to go at a different level of some out of the box solution to make it an all inclusive document, sir? Your take on that, sir, please. I think this is very good point, and let me acknowledge the importance of this point. We had a first consultation for Balochistan province during last couple of weeks. And what we adopted for Balochistan, we had few informant interviews, different age groups, different geographical areas, fully diversified demographic approaches. We also had few focus group discussions, engaging students, women of different socioeconomic groups, males, out of school and school children. So a variety of focus group discussions and key informative interviews. The logic behind was exactly what you mentioned, that we need to incorporate the thoughts and needs of different, not only demographic perspective, but even different different areas from different
dimensions from population so that we can at least incorporate their thoughts and needs into this policy work. This area, and in addition to this, as I mentioned earlier, that we are supposed to work and engage all the four provinces and three regional areas. So 7 regions across the country to incorporate their local context, how they are behaving for their food, what are their dietary behaviors, what are their consumption patterns. So this is a bit more comprehensive kind of work what we're doing behind this policy. Do we have any other question? Okay, now I would request Kasim Saab for his vote of thanks. Thank you so much, Khan sir. I'm indeed thankful to Dr. Shehzad, Dr. Marine, who was traveling this morning, so she could not join in person, but she was very kind actually to provide a video message for all of us. Faiz Saab, he is somebody who actually started this debate, I believe, on the healthy diet policy and its requirements. And he is trying to facilitate not just the gain and the partners, development partners or SDPI. We are just in this process of facilitators who are trying to facilitate in the process of policy formulation. Policy formulation is, at the end of the day, the job of the government. They have to come up with their own kind of solutions, and they have to indicate what kind of resources they are going to imply and what kind of strategy they're going to adopt area-wise, region-wise, age-wise, culture-wise. And that is the most important thing here, which we need to learn. While Dr. Shehzad was talking about the Zero Hunger program, the dietary diversity and other things, this reminded me of one of the conference which we organized together with the World Food Program back in 2011. In that very conference, the outcome was that we need a strategy actually to initiate a debate on the food security itself. And what is the food security? And in the room, everybody was speaking about the food security, but there was not a single person who talked about the nutrition at that point of time. We came back in Islamabad and we have one meeting with then the secretary of MNFSR. And we discussed different ideas, and he said that perhaps it's time to come up with some novel idea which we can just not sell to the governments and the development partners, but which is appealing to the people as well. And we talked about this Zero Hunger program. And those were the days actually the people in Pakistan started studying the Brazilian model. And then a couple of missions were organized, and we had a lot of learnings from those missions. And the Brazilian embassy, I still remember that they were very cooperative about it. And they said that they are providing all the support which Pakistan needs at that point of time. But in 2012 budget, when we saw, the government mentioned in the economic survey that the government is interested actually in initiating the Zero Hunger program in Pakistan. The economic survey was released, I believe, on 2nd of June. And on 4th of June or 5th of June, when the budget was released, there was no funding for the Zero Hunger program. In fact, the budget was reduced for the Ministry of Food Security and Research compared to a year ago. And that was the very nascent stage for the ministry itself as well, because that was the very year ministry itself was established. So we don't expect that they could have gathered a lot of support actually to some of the initiatives they wanted to start. But if we look into, and when Khansa was presenting and in some chronological order that what the government has done over the years, this reminded me that perhaps we have covered a lot of distance. But still, this policy actually can help us to identify the destination where we want to reach. So I believe this is something where we need to work. And this is where we need to create some, not just education, awareness, but more of the evidence. That why, as Faisal said, that we need basically now, and they have already initiated this process, but we need more and more actors and the players actually in this regard. And perhaps this whole thing starts, and we recently doing this, STPI was doing this study on the evidence used in policy development in Pakistan. And we tried to identify the actors.
And one thing where we were very successful, that over the years in Pakistan, what we have seen that most of the changes, the change agents, I would say, has always remained the parliamentarians. Some people say that they have been used by either some development partners, either by some other institutions, but that has never been the case. Because the parliamentarians were the ones who accepted the idea and then they initiated the debate. Zero Hunger Program, Yusuf Raza Gilani Saab inaugurated that back in 2012, but he could not implement it. But 3 or 4 years later, again there was a debate about the rise in hunger in Pakistan. And that was the time in 2016, I remember STPI was again a partner with the World Food Program. We did this report on the food security situation in Pakistan. And we found out that number from 2003 and 2009 reports have increased tremendously. And at that point of time, the people started talking about a policy as well. And that was the first ever the National Food Security Policy was produced. And then the second draft was in 2018, 2013-18 policy, and 2018 to 2013, 2023 policy. And now we are in another phase. So what are the possible options? Dr. Saab was talking about that most of the policies are basically the agriculture-based policy. I won't say that those are the food security policy, because you are very segmented. You talk about the specific products, you talked about the specific crops, you talked about the specific outcomes, and which are more and more related to the production. But we need to move beyond it. And we have moved a lot. There is a change now in the way of thinking within the government, within the different actors, within the development, within the academia. They are providing a lot of evidence that perhaps in academia itself, there has been a lot of change. Now the debate is in the food systems. Globally, the people are talking about it, that how we can integrate every aspect of food, nutrition, and other things within this overall ambit of the food systems. SDG 2, except SDG 13.2, if you look, most of those nutrition related elements are clubbed in the first 3 and 4. So we here in Pakistan are basically, Dr. Saab again said, Faisal said that the graveyard of policies. But it's not the graveyard, basically, I would say. Basically, we try to dump everything and we reuse it at a certain point when we realize that there is a need to adopt, and then we try to change it and adopt it after a couple of years. And the very example is the National Zero Hunger Program itself. But I'm very thankful to you all for coming here, joining here, sparing your time to attend this important event. Khansa, perhaps you have more to say, but I'm very thankful, Dr. Shahzad, for you to join us today. Thank you. Thank you so much, Qasim Saab, and thank you so much to our audience for joining us, and thank you for your patience. Just to bring a change, we are serving you healthy meal and entry served all outside. Please go and enjoy it.